Hello, and welcome to Pale Bolte, a community radio podcast where we explore stories, voices, and places that make Ville Pale one of Mumbai's most loved suburbs. I'm your host Shruti, and today we're talking about something very special every Mumbaikar connects with local trains. Specifically, the one stop that has quietly witnessed Mumbai's growth over a century is Ville Pale Station. Joining me today is Anushka, a true Mumbaikar who has been traveling through Parle station for years and has her fair share of train stories. Hi Anushka, welcome to our podcast. Hi, Shruti. How are you? I'm good, how are you? I'm also good. Thank you for having me on your show again. A Yeah, few weeks back, also, I was here yes, talking about Villepalli. And again, yeah, I think, yeah, a few days back when you texted me na, that you want to do this podcast, I yeah. felt like someone wants to know about my childhood. Someone Okay, wants to know about my second home. okay, So Villepalli is my home, second home for yes. me. So Ville Parle So is I'm very that much excited. connected to you. Yes. My mom has been born and brought up here in विले पार्ले. Oh, मैं पहले विले पार्ले रहती थी अभी अंधेरी शिफ्ट हो गई हूँ oh, तो acha. मतलब बचपन से I've spent 17 years of my life in विले पार्ले. So it's definitely special for me. And I've also done my college from UPG which is again in विले पार्ले. तो मतलब मेरे लाइफ से विले पार्ले कभी गया ही Right, नहीं. obviously. That's great to hear. Hmm. Uh, so like that is so true ki that you're so connected to Ville Parle and Ville Parle is Hmm. a part of you now. There is something very grounded about Ville Parle and even about the station. So let's get the podcast started and let's go back in time a little bit where it all began. So do you know the background or backstory of Ville Parle station? Can you tell our listeners? हाँ देखो पहले तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1906 Okay. like more than 100 years ago. Oh, Can you that's imagine? incredible. That's incredible. हाँ Over a मतलब century बहुत लोगों को ago. नहीं पता है. हाँ हाँ. People think that it was established maybe 20 or 30 years ago, but that's Yeah, not the case. And back then, the scenario was very different. right, मतलब मैंने अपनी मॉम से ऐसा स्टोरीज सुना है कि पहले यहाँ पर ऐसे खाली ग्राउंड होते थे, कोकोनट ट्रीज होता था, इतना right, डेवलप नहीं था बेसिकली. right. अभी तो कुछ खाली मुंबई में मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है और वो भी विले पार्ले जैसे जगह में. True, तो absolutely. आई थिंक पहले बहुत ही इतना अर्बनाइज नहीं था, काफी एकदम ग्राउंडेड था. अब Right, भी right. है बट बैक देन इट वाज वेरी सिंपल. Obviously. Even I used to think कि Vilepale station was built before like 30, 40 years ago. So I didn't know it was a हाँ सबको century यही लगता है ago. हाँ. So it's very incredible to know कि it's such an old station and it's still holding its charm till this हाँ date. एक्चुअली देखो स्टेशन तो एस्टेब्लिश होके इतने साल हो गए, उसके बाद विले पार्ले बहुत चेंज हो गया, लेकिन जो स्टेशन है ना उसका Hmm. जो एसेंस है वो अभी सेम है. Right. आई मीन द Absolutely. वाइब, द पीपल. मतलब हाँ. Vilaypalli is known for colleges, Mishibai, DJ Sangvi, UPG and what not. Yes. तो तुम हमेशा वहां पर ना एक क्राउड में डाइवर्सिटी पाओगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एन अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, यू वुड हाँ. फाइंड स्टूडेंट्स विद देयर बैकपैक. थोड़े देर Oh, बाद जाओगे तो अच्छा. लोग ऑफिस जा रहे हैं. अच्छा. तो हाँ. ये जो एक है ना ये सदियों से ऐसे चले ही आ रहा है. So, in a Right. city like Mumbai, in a city like Mumbai where everything is constantly changing, Right. कुछ एक Obviously. ऐसा ढूंढना जो which is like which has been consistent for like years. It feels Exactly. very special to witness this, and I'm Exactly. lucky that I have. Yes, obviously, it that's fascinating. And when you look at the old architecture, especially of the Ville Parle,
the red tile roofs and metal beams. Hmm. It still has that vintage charm, like you said. It's still there. बिल्कुल. आई थिंक विले पार्ले काफी इवॉल्व हो गया है. Hmm. Right. पहले बीट आर्किटेक्चर और एनीथिंग. लेकिन जैसा कि मैंने बोला, वो एक जो यहाँ पर रह चुके हैं ना सालों साल, उनको बहुत पता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले, या फिर यहाँ का जो एनर्जी है वो स्टिल Right. सेम है. लोग आते Same. हैं जाते हैं, बट वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड ही हुआ Right. आगे. Right. Yes. Exactly. Matlab, in the early episode, our हम्म. guest Samiksha also talked about this similar situation where everything, the हम्म. like the soul of the Ville Parle is still there even after all of these years. So that's incredible. So I want to ask you a little question again. You take the या. train almost daily, right? So what's the one thing या. about Ville Parle station that stands for you? आई थिंक इवन विथ सो मच ऑफ chaos ना, there Huh? is a bit of comfort. Okay. Like there's a sense of comfort in that station because uh, हम सबको पता है मुंबई क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड बहुत. है. हमेशा पीपल हियर Absolutely. बिलीव्स इन द हसल कल्चर. Hmm. तो when you take the same train at the same time, you get to see like the similar people a lot of time. और Right. धीरे धीरे ना उनके साथ एक बहुत ही अनसेट बॉन्डिंग हो जाती है. मतलब आपको भी नहीं पता चलता क्योंकि आप रोज देखते हो, रोज मिलते हो, सेम टाइम पे जाते हो. True. आई थिंक ऐसा बॉन्ड इस शहर में क्रिएट कर पाना एक बहुत बड़ी बात है. एंड इट कैन ओनली हैपन इन विलेपार्ले स्टेशन. फॉर एग्जाम्पल इन स्टेशन लाइक दादर और अंधेरी, इतने Andheri, भीड़ में yes. आप को बैठने की जगह नहीं Yeah. मिलती है. The आप मतलब station बॉन्डिंग कब itself, करोगे. the Dadar and Andheri stations, even Thane हम्म. stations is like they're overwhelming in itself because the in the rush hours एग्जैक्टली. it's so crowded. You don't know the platforms, and there are so many platforms. You just skip platform and you go to the wrong platform. It's so crowded and chaotic there. Yeah, it's not the same in Villepal. It's definitely very crowded. कोई इसमें डाउट ही नहीं है. लेकिन उसके साथ साथ भी जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ना एक जगह के साथ, तो फिर वो Right, क्राउड भी कहीं ना कहीं ठीक है, हो जाता है. आप right, right. यूज टू हो जाते हो. Hmm. Exactly. और आई Like थिंक मेरे लिए वो स्टेशन विलेपार्ले ही होगा. obviously, matlab, it's a bit calm station compared to the other stations. डेफिनेटली. So that's हम्म. a good thing about Ville Parle. And you know what I have noticed, because it is surrounded by NMIMS, like colleges like NMIMS, Mithibai, DJ हम्म. Sangavi वगैरह. So हम्म. there is a lot of young energy. Like if you go to the यस. peak rush hours from like 9 to 11 in the morning, you'll see a lot of young youth, like young people just there to हम्म. catch the train to go to their colleges, and it's so youthful environment. I don't know how to explain that, but it's just so आई energetic. नो, आई नो. मतलब देखो, मेरा जैसे कॉलेज होता था सुबह का 7 AM का, ठीक है ना, रेगुलर. हाँ. Right. 3 साल ऐसा ही चला. और तो पूरा जो ट्रेन होता था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पूरा, सब हम्म. कॉलेज स्टूडेंट से भरा हुआ होता था. हाँ, वो हाँ. सब एक साथ लगता था जैसे हम कॉलेज जा रहे हैं, और सब जाके विले पार्ले में, और ऑटो के लिए फिर एकदम लंबी लाइन. तो ये एक Right. रेगुलर रूटीन बन गया था. और फिर Exactly. अगर थोड़ा सपोज हम कभी जैसे बोला रश आवर में 9 to 11, तब सिर्फ Hmm. स्टूडेंट्स नहीं होते, तब ऑफिस जाने वाले लोग भी हो जाते हैं. तो पूरा Right. एकदम पैक हो जाता है. True, but it's एंड still. विले पार्ले इज फुल ऑफ देम. इट्स हाँ. देम हु मेक्स विले पार्ले विले पार्ले. Yes, it's still matlab, it's still crowded. It's not too crowded, but it's thoda हम्म. crowded because obviously college life and all. But it still has हाँ. that calmness to it. No, say bhagam bhag. नो डाउट. So that's a good thing, and आई it थिंक वही has बहुत the. अच्छा लगता है. नहीं नहीं, continue हाँ continue. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी, नहीं फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ऐसे ऑफिस जाते हैं, Hmm. काम पे जाते हैं, तो जब उनको देखते हैं तो बहुत है कि लगता है कि ठीक है, इट्स नेसेसरी टू स्लो योर लाइफ डाउन. हाँ, फॉर obviously. एग्जाम्पल उनको जब ऐसे देखते हैं
खा रहे, एकदम चिल है, कॉफी पी रहे हैं, तो हमको लगता है हम क्यों इतना ऐसे हसल कर रहे हैं, हम भी थोड़ा ऐसे स्लो हो जाते हैं, चिल हो जाते हैं। तो वो एक वाइब है विले हाँ, पार्ले का। true. That is so true. And it's organized chaos. It's like at its best. So, another question coming towards you, Anushka. Can you tell me one unique Yes. fact about Ville Parle station? Like, do you know any fact? यस यस, एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि जो एस्केलेटर है Okay. वो like Vilaypalli is one of the suburban station to have escalator like in the early stage. Okay. एकदम सिर्फ थाने को ही आई गेस हुआ था, थाने ने अपडेट किया था हाँ खुद हाँ. को। बट विलेपार्ले भी उसमें से एक था, बट बहुत लोगों को नहीं पता। इट हैपेंड इन 2013। Okay. So, Ville Parle station was the first suburban stations to get the escalator after Thane, यस right? यस, That's एट इन amazing. 2013। या That's या, really amazing. I really didn't know that. I thought it was बहुत लोगों को installed. नहीं पता है। I thought it was हाँ, installed एक्चुअली लोग like छोटे छोटे डिटेल्स पे उतना फोकस ही नहीं करते। exactly. Exactly. Like that's true. And you can see a हम्म mix of like old and new even today in modern facilities, but the same हम्म, familiar feel is there. डेफिनेटली। मैंने जैसे बोला कि लोग आते रहते हैं मुंबई करने, क्या पर जैसे बहुत सारे हॉस्टल्स भी है, तो हाँ अलग अलग स्टाफ है। लेकिन जो रेसिडेंट्स है वो मेक श्योर करते हैं कि जैसे विलेपार्ले पहले भी था वो अब हाँ. भी रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, क्लीनिंग का। मुंबई में क्लीन Okay. मतलब क्लीन Cleaning मुंबई का तो drives, इशू right? है ही। हाँ. हाँ हाँ। तो क्योंकि जैसे एनएसएस होता है, आरसी होता है, तो ये लोग इनिशिएटिव खुद लेते हैं और पूरा वो क्लीनिंग का जिम्मेदारी जो है वो खुद लेते हैं। Oh. जैसे क्लीनिंग ड्राइव होता है, वो रैली के लिए जाते हैं, पोस्टर्स शो करते हैं कि क्लीन मुंबई, क्लीन Oh. विलेपार्ले, समथिंग लाइक दैट। दे मेक देयर ओन स्लोगन एंड डू द इवेंट। तो और रेसिडेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ। Acha, तो that is very I think and that amazing. is what makes Vileparle special. You know, That the is residents don't look at it as a place; they look at the entire station as their home. that is incredible. And I've been to Ville Parle a few times, and I've Mm-hmm. seen the station is very clean. So I guess the because of the drives, they clean the station and they keep it clean. So that's very Mm-hmm. good. On weekends especially, you said हाँ, keep people gather with gloves and posters to do the cleaning drive, and it's inspiring because it leaves a mark on the younger generation which is coming. So उनके भी दिमाग में definitely. वो पड़ जाता है कि no, we should keep our spaces clean even though they are public spaces. हाँ, So that is amazing. इवन मैं भी जब कॉलेज में थी मैं भी काफी ये सब में पार्टिसिपेट करती थी। बीच क्लीनिंग हो गया, अपना एरिया क्लीनिंग हो गया। हाँ. तो और ये सब इवन मेमोरीज में भी ऐड हो जाते हैं ना तुम्हारे, कि हाँ हम सबने मिलकर ऐसे क्लीन किया था। Right. Right, लिटिल right, सिली exactly. मेमोरी। So like every Mumbai station has its own personality. Anushka, how would you describe Ville Parle's personality? Like what word would you use? वार्म एंड कंफर्टिंग, ये दो। Oh, हम्म, जैसा कि मैंने nice. बोला, हाँ, इतने हसल बसल में भी you go to new places, sometimes you feel good, sometimes you feel bad. Even हाँ. on your bad days, when you come back to the station that you Hmm. use regularly, you just feel a sense of familiarity. The familiar Okay. voices, the people, the slowness, the calmness. So it feels like a warm hug. कि ठीक है, इतना शोर शराबा है लेकिन कुछ तो है जो अपना है। Right. और Exactly. Like, और विलेपार्ले स्टेशन, ये जो भी हमारे ऑडियंस है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, विलेपार्ले स्टेशन के बाहर, वेस्ट के बाहर हाँ. बेस्ट मोमोज मिलते हैं। प्लीज गो एंड ट्राई दैट। जब भी मूड खराब हो, कुछ भी हो, मोमोज खा लो, मूड अच्छे हो जाएंगे। Right.
Obviously, I will go and try that now. But exactly, it's one of those rare stations that feels like a community space and not just a transit point. Like it has a character to it. Hmm. it really is the, I mean, इतने सालों से एक स्टेशन रहा है और लोगों ने Hmm. बनाया है, इसलिए उसके पास कैरेक्टर है। नॉर्मली क्या होता है ना बाकी स्टेशन में, सिर्फ लोग आते जाते रहते, उतना Hmm. कनेक्टेड नहीं फील करते। बट जब कोई इंसान दिल से उसको अपडेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने बोला, फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ विलेपार्ले इट्स लाइक देयर होम, द एंटायर विलेपार्ले इज देयर होम। सो व्हेन यू ट्रीट अ प्लेस एज योर होम, तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही फ्लरिश होता है, ब्लूम Right. करता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद विलेपार्ले। Literally, like the station has seen generations grow up. So from like early हम्म 1900s to now. So it continues to carry that spirit and those memories forward with every passing train. Like that is very amazing to know. आई मीन, आप बोल सकते हो विलेपार्ले इज द स्टेशन दैट नेवर स्लीप्स। Right. We say this for Mumbai, entire Ha. Mumbai, but I say this for like Vileparle. That is ये कभी नहीं amazing सोता, जब to भी hear. जाओगे कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा। Right, exactly. Like it's हम्म like a storyteller that never stops speaking. So, it's great station and it's great community environment. And even the whole Parley Parle has like a warm and comforting feel to it, which I personally love. And I know that you'd love हम्म। that too. So so that was the story of Vileparle railway station, more than a century year old, yet still lively as yet still as lively and dependable as ever. It's not just a stop on the map, it's a symbol of connection, rhythm, and everyday Mumbai life. Anushka, thank you so much for joining us and sharing your thoughts and sharing those incredible stories with us. Thank you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे पुरानी यादें ऐसे लग रहा है ताजा हो गया। मुझे ऐसा लगा मैं कॉलेज डेज पे वापस चली गई। अभी मैं मिस भी थोड़ा Right. कर रही हूँ, बट इट्स ओके, Traveled बट आई back हैड into सुपर the फन time. टॉकिंग टू यू। या Okay. And to our listeners, thank you for tuning in to Parle Bolte. In the next episode, we'll explore another side of Parle, one that shaped thousands of young minds and built a reputation as Mumbai's educational capital. Till then, this is Shruti signing off. Stay curious, stay connected, and keep listening to Parle Bolte. And don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye, Anushka. बाय। हो गया ना? Done. Okay. I'll stop recording now.